પાછળ સુરતથી રાંદેર વિસ્તારનો વિડીયો વાયરલ થયો છે। રાંદેરના પીએસઆઈની કારમાંથી મળી દારૂની બોટલ લોકોએ જનતા રેડ કરીને પકડી પાડ્યા। પોલીસ સ્ટેશન લઈ જવાને બદલે રાંદેર પોલીસ પીએસઆઈની રિક્ષામાં બેસાડી ઘરે મૂકી આવી। વરડીમાં દારૂ પીતા પીએસઆઈ પકડાયાના આક્ષેપ। રાંદેર પોલીસ ફરિયાદીને દબડાવતી હોવાનો પણ વાયરલ વિડીયોમાં આરોપ છે। अन्य समाचार वलसाडथी उमरगाममां जोखमी सवारीनो विडियो वायरल थयो छे। जीपमां बाळकोनी जोखमी सवारीनो विडियो वायरल थयो छे। उमरगाम तालुकाना ग्राम्य विस्तारमां भणता बाळकोए शहेरी विस्तारनी स्कूलोमां आववा जवा माटे अन्य कोई वाहननी सुविधा नहीं होवाथी बाळको मजबूरीवश આવી રીતે ખુલ્લી પિકઅપ વાનોમાં શાળાએ પહોંચે છે। જો કે આ વિડિયો વાયરલ થયા બાદ વલસાડ જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ વિભાગ એક્શનમાં આવ્યું છે। જિલ્લા શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા તપાસના આદેશ અપાયા છે। तो अनेक सवालों અહીં उपस्थित થઈ રહ્યા છે। જોખમી સવારી પરંતુ આ કોની જવાબદારી તે સૌથી મોટો સવાલ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી પણ ઉઠાવી રહ્યું છે। આ પહેલા પણ આવા દ્રશ્યો સામે આવી ચૂક્યા છે, પરંતુ જો અકસ્માત સર્જાશે તો કોણ જવાબદાર તે સૌથી મોટો સવાલ તંત્ર માટે। વાહન ચાલકને કાયદાનો કેમ ડર નથી લાગતો અને સાથે ટ્રાફિક પોલીસને શું આ નથી દેખાઈ રહ્યું તે પણ સવાલ અહીં ઉપસ્થિત થઈ રહ્યો છે। તો જોખમી સવારીને લઈને જવાબદારી કોની તે પ્રશ્ન। आज विडियो जोता जे ते जवाबदार व्यक्ति हशे के जे शाळा हशे एमनी सामे अमे योग्य कार्यवाही करवा जई रह्या छीए। राजकोट शहर ट्राफिक पोलीस एक्शनमां आवी छे। शाळामां बाळको वाहन लईने आवता होवानी फरियाद बाद पोलीसे चेकिंग हाथ धर्युं छे। शाळाए लायसन्स वगर वाहन लईने आवनारा विद्यार्थीओ विरुद्ध पगलां लेवाशे। आ उपरांत वाहन आपनार वालीओने पण बक्षवामां नहीं आवे। वहेली सवारथी ज ट्राफिक पोलीस द्वारा चेकिंगनी प्रक्रिया हाथ धरवामां आवी हती। तो द्वारकामां 21 जेटला निर्जन टापुओ पर अवरजवरनी रोक लोकोनी अवरजवर पर तंत्रए रोक लगावी। 29 मे सुधी 21 टापू पर अवरजवर पर प्रतिबंध रहेशे। देवभूमि द्वारका अधिक जिला कलेक्टरनुं जाहेरनामुं। समुद्र तटथी जोड़ायेला 24 टापूमांथी फक्त 2 टापू पर ज मानव वसाहत समुद्र रस्ते देश विरोधी प्रवृत्तिओ घटे ते हेतुथी तंत्रए रोक लगावी छे। कोईपण व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्तिना नाम पर देश विरोधी प्रवृत्ति हाथ न धरे ते बाबते सुरक्षा व्यवस्थाने ध्याने लईने करायुं जाहेरनामुं प्रसिद्ध। तो 7 टापुओ पर थोड़ा समय पहला ज गैरकायदेसर धार्मिक दबाणो कराया छे दूर। तो महत्वनुं छे के 21 जेटला निर्जन टापुओ पर अवरजवरनी रोक रहेशे। महत्वपूर्ण समाचार लोकोनी अवरजवर पर तंत्र द्वारा आ रोक लगाववामां आवी छे। 29 मे सुधी आ 21 टापू पर अवरजवर नहीं करी शकाय। सूरतना कापोद्रा विस्तारमां पेट्रोल पंप पर चोरीनी घटना। कर्मचारी द्वारा ज लाखों रूपियानी चोरीने आप्यो अंजाम। पेट्रोल पंपना कर्मचारी द्वारा रोकड़ा रूपिया 7 लाखनी चोरी करी हिसाब मेळवता चोरी थई होवानुं मालूम पड्युं। पेट्रोल पंपना मैनेजर द्वारा कापोद्रा पोलीस मथके फरियाद नोंधावी। कापोद्रा पोलीसे आरोपी अनिरुद्ध प्रताप सिंहनी धरपकड़ करी। समग्र घटना सीसीटीवी कैमरामां कैद थई छे। तो जे प्रकारथी समग्र घटना सामे आवी रही छे आ समग्र घटना सीसीटीवीमां कैद थई पेट्रोल पंपमां कई रीते चोरी करवामां आवी हती ते जोवा मळी रह्युं छे। कर्मचारी द्वारा ज लाखों रूपियानी चोरीने अंजाम अपायो। तो बीजी तरफ गीर सोमनाथ जिला कलेक्टरे गैरकायदे खनन करता माफियाओ सामे तवाई बोलावी छे। कलेक्टर द्वारा खनिज विभाग और रेवन्यू विभाग ने छेल्ला 1.5 महीनाथी खनिज चोरी मामले तपास करवा सूचन करायुं हतुं। जेमां सतत रेड कराता 26 लीज धारकों पर कार्यवाही करवामां आवी छे। आ तमाम थई 221 करोड़नो दंड फटकारायो छे। एटલું જ નહીં, રોયલ્ટી ચોરી પણ કરવામાં આવતી હતી। તપાસમાં વિસંગતતા સામે આવી। આ તમામને પણ કરોડોનો દંડ ફટકારાયો છે। હાલ પણ આ ઝુંબેશ યથાવત છે, જેથી આવનાર સમયમાં હજુ ઘણી ખનીજ ચોરી ઝડપાશે।